A day in a life of a cabin crew. Hi everyone, I am Lavanya and you're watching The Lavanya Tube. Today I am operating two sectors Chandigarh Bombay, Bombay Chandigarh flight, and this is a bit hectic flight because obviously this is a morning flight. So, first of all, you'll be waking up at 3 a.m. in the morning, and this is the most difficult part because most of the time it happens with me and most of the crew that we are not able to sleep because आप खाना खाते हो रात में और सब कुछ मतलब you do all the preparations and everything. तो 9 साढ़े 9 10 बज ही जाते हैं और बिस्तर में आके तुरंत नींद नहीं आती. देन इट टेक्स 1 आवर और हाफ एन आवर टू स्लीप और फिर 11 बज जाता है, साढ़े 11 12 बज जाते हैं और फिर बचते हैं 3 घंटे और फिर सुबह 3 बजे उठ के आपको रेडी होना है. देन द कैब विल कम, यू विल गो फॉर द फ्लाइट एंड other stuff. So usually this happens that crew is very sleepless for the morning flights. But now I know when I was very new to this profession, it was very difficult for me to wake up so early in the morning. But now I am a zombie. I can work for 24 hours without sleeping. My body is so much adapted to this that I can wake up at any time of the day and sleep at any time. It's like this is how my body functions now. I don't know how does it sounds to the people that waking up at 3 a.m. and then getting ready, getting so much of makeup done, being cabin perfect, and then working on the aisle. I don't know how does it sounds, बट वॉट कीप्स मी मोटिवेटेड इज़ दैट अगर ये नहीं तो फिर कुछ और करूँगी और कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा ना. कुछ भी अपनी लाइफ में इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, कुछ भी छोटी सी चीज़ भी, तो उसके लिए कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा बिकॉज जब तक हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तब तक कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते. So this is the only thing that keeps me going, and I hope so in the future. So that is it for the day. Stay tuned.